and notable expert in health, education, and research who shall share their expertise with us shortly in the form of inaugural, keynote, and thematic lectures. On the behalf of organizers and collaborators, we would like to extend our heartfelt greeting to all of our dignitaries of today's event. Ladies and gentlemen, we at an International Academics and Research Summit 2022 are committed to enhance the scientific knowledge and to deliver an enriched experience to the delegates. This conference aims to bring together not only the national and international experts to discuss ways to achieve the sustainable developmental goals, but also ways to integrate the goals with a special emphasis on the good healthcare delivery. We shall start the inaugural session with the name of Almighty Allah. I request Muhammad Rafiq Qadri to come up on the stage and recite few verses from Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. Jazakallah khair. Allah has made this world a temporary abode. We face many trials and tribulations here, and one of the few places of solace we find here is the warm embrace of our parents. Last night, our respected Director Student Affairs, Dr. Sajan Haripoto, lost his embrace love of his father, as his father passed on to the hereafter. We pray that he find a high place in Jannah. I request all of you to please recite Surah Fatiha for Dr. Sajan Haripoto's father. The love of Father is second to none, but the care that teachers offer is not far behind. We are still struggling to cope with the loss of our most respectable teacher, Professor Dr. Nasra Haider Qazi. She left us all to meet her maker on November 11, 2022. I urge you all to please observe 1 minute silence in remembrance of the teacher of teachers.
To formally start the proceeding of inaugural ceremony, I request the Chairman and Secretary Organizing Committee to escort our worthy Vice Chancellor of Liaquat University of Medical and Health Sciences, Professor Dr. Ikram Uddin Ujjan, the esteemed guest of honor, respected Senator Karim Khwaja, Engineer Mohammad Ibrahim Mehman, who is the Pro-Vice Chancellor of University of Art and Culture Jamshoro, and our most celebrated chief guest, Professor Dr. Mudawat Hussain Rana, to please come on seat on stage. Ladies and gentlemen, let's rise the tune of national anthem of our beloved Pakistan. To commence this auspicious occasion, I would request Honorable Professor Dr. Muin Ahmed Ansari, the Dean Faculty Medicine and Allied Chairman Organizing Committee, to kindly come and deliver the welcome address. This summit is the brainchild of Professor Dr. Muin, and we thank him for the many months of hard work and diligence. This made this day possible. What a pleasure and what an honor to welcome you all in this great scientific event. To the LUMHS, where we are seeing the beginning of a new era, the era of scientific research, academics, ethics, and professionalism. We have recently seen a lot of progress and innovation in the clinical services that we have been providing here in the form of new technologies. We have recently seen some new changes to enhance and facilitate the postgraduate studies and the policies that we have been adopting for the better and better academic advancement for the new world leaders and in academics of medical education. We have recently seen new courses emerging up, new fellowships, and doctorate programs in this beloved LUMHS. And this is mere the beginning of various initiatives that we have been introduced so far that not only brings the innovation, it also caters to the changes in the way academic and research excellence is perceived. We are
at the turn of new wave by expanding the horizons of notions prevalent in the areas of academics and research. An excellent example is our Center for Academic and Psychosocial Well-being that not only caters to the academic needs of our students, but also caters to their psychosocial problems which they encounter day to day. I am pleased to herald the new age of maintaining standards for morality, for professionalism, and for biomedical ethics in the form of Center for Biomedical Ethics and Professionalism to be established very soon. Our proud clinical and basic departments, Quality Enhancement Cell, Department of Medical Education, Directorate of Postgraduate Medical Studies, Directorate of Sports, and institutes which are headed by the professional leaders with vision and mission of professional excellence are destined to transform the history of medical education. Ladies and gentlemen, I feel no hesitation in stating that LUMHS would be an institute which truly expect to produce world academic leaders in medical education, inshallah. So clear and doubtless is the presence of our current leadership in the form of worthy Vice Chancellor, Professor Ikram-Uddin Ujjan. No doubt, I think you should clap for him. And I heartily welcome you all in this incredible assemblage of honorable and learned medical scholars who have taken their time out of their busy schedules to enlighten the minds with changing dynamics in academics and research in the field of medicine. This academic event has been so rich scientifically that 3 days summit would not be able and would not be sufficient to accommodate the breadth and depth of the activities that we had. And therefore, we had more than 100 pre-summit activities in the form of workshops, in the form of symposia and seminars. And this is a clear and glowing evidence for the immense success of this International Academic and Research Summit, which officially commences today. Our objective in this summit is to understand the integration of healthcare delivery with sustainable development goals of United Nations. I hope this summit will make us filled with a lot of evidence-based and up-to-date medical concepts on one hand, and will also provide a chance to socialize among one another on the other hand. Thank you very much. I will request our worthy Vice Chancellor, Professor Dr. Ikram-Uddin Ujjan, to come forward and deliver his address. Professor Dr. Ikram-Uddin Ujjan has parted the summit wholeheartedly and deserves a round of applause. This is just as generous as a support for the conference. Bismillah ar-Rahman Rahim. I think two senior professors, they left this word. One is the Professor Nasra Haider. Another professor which we are missing continuously is the Professor Ikhlaq Nabi, who is professor of the pharmacology. So I think we can recite the Surat Fateh for all these three persons. One is the father of Dr. Sajan Hale Poto. And also we are missing the Shuhadas of the 16th December in the Army Public School of the Peshawar. So we will recite the Surat Fateh for all these, and then we will start our session. Bismillah ar-Rahman Rahim. All the respected distinguished guests, chief guests, and all the delegates, dear faculty members, dear students, Assalamu alaikum and good morning to everyone. It gives me proud privilege and honor as Vice Chancellor to welcome you all on this auspicious occasion of LUMHS International Academic and Research Summit 2022 at Liaquat University of Medical and Health Sciences, Jamshoro. Health is a crucial role for sustainable human development.
both for an absolute human right and essential contribution to the life of economical growth of society. Health is also good cumulative measure of the progress of nations in achieving sustainable development. It contributes to the national development throughout product employment, reduced expenditure on illness, and greater social structure. By promoting good health at all ages, the benefits of development extend across the generations. Investment in primary health care can promote health across the social groups and reduce health inequalities in the society. With many places around the world, our healthcare system is facing the challenges of an aging population and escalating medical cost. To meet the challenges, we need structural changes to our healthcare system to make it more sustainable, more affordable. One key direction and something that is especially relevant to the medical profession is to strengthen primary healthcare with quality and cost effectiveness. Improving and performance of health system by enhancing financial and human resource, appropriate use of the technology, community empowerment, and good governance will advance this agenda. Potential for providing large-scale employment as frontline health workers, particularly to the women and young persons, should be utilized to strengthen the economy and improve the health services. The era of the Sustainable Development Goals has been activated, where the health of the people is well placed. The health-related goals are broad to ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages. Sustainable Development Goals Declaration emphasizes that to achieve the overall health goals, we must achieve universal health coverage and access to quality health care so that no one must be left behind at that. We believe that universal health coverage delivered throughout an effectively resourced and well-administered health system will be capable of addressing these health challenges, appropriate health services of assured quality to all peoples. Universal health coverage must be supported by the policies, services addressing the broader and social environment factors of the health for individuals and population. And I congratulate Professor Muin and all his organizing team for their untiring efforts for successful of this conference. And I am also highly thankful for all faculty members, including the Bilal Medical College and surrounding medical college, the university. They have worked hard too much for the successful of this conference, and more than 100 workshops they have conducted. And first time I have seen in my life that around 100 workshops they have conducted for this pre-summit conference. So again, I congratulate all the organizing committee and their members, and all, I'm also thankful all the faculty members. Thank you very much. Allah Hafiz. Thank you, sir, for your kind words. I will now request our worthy guest of honor, Senator Kareem Khwaja, who is the chairman of Sindh Mental Health Authority, to please come forward and deliver his address. Worthy Vice Chancellor, Mr. Ikramuddin Urjan Saab, Professor Muin Ansari Saab, Muaddad Rana Saab, Professor Ibrahim Mehman Saab, Rahil Sikandar, Professor Saab, ladies and gentlemen, faculty members, media persons, students, Assalamu alaikum. First of all, I will congratulate Muin Ansari, Professor Ikramuddin Urjan. Professor Ikramuddin Urjan, Vice Chancellor, told me that they are doing these type of workshops, scientific sessions, many things internationally and nationally. So I give congratulations to Vice Chancellor and my friend Muin Ansari Saab. He is doing excellent research work. I pray that he must succeed in future also. A good friend and scientific person, research-oriented person. Sir,
I'll put the thing in front of you that integration health care delivery system with sustainable development goal. So fortunately, I represent Pakistan in Geneva 2016 in Health Assembly, and I was representing my country, Pakistan, and on behalf of my country, Pakistan, I promised them that we will bring a resolution in Assembly. When I returned from Geneva, so fortunately, God, by the grace of Allah, the resolution was passed in Senate and National Assembly that Pakistan will follow the footstep of the World Assembly, that is Sustainable Development Goal. So I had the honor for it. So now everywhere in Pakistan, you will find these units of Sustainable Development Goal in Planning and Development Ministry in federal government and all the provinces, including Gilgit and Azad Kashmir. So Pakistan is moving whatever the world had decided, and the topic, Moin Saab, you have selected, very excellent. Definitely, we have to integrate this thing in the healthcare system to reduce suicide, to give the people the basic necessity, which is the goal of the sustainable development. So I wish the conference success. I'm thankful to remember me. And Government of Sindh, on behalf of Chief Minister and Government of Sindh, we are with Vice Chancellor, this institution, whatever you will say, we'll try to fulfill it. Thank you very much. I would request our respectable deans to please join our guests on the stage and to be seated. I would request our respectable deans to please join our guests and to be seated on the stage. I now call forward our next respectable guest of honor, Engineer Mohammad Ibrahim Mehman, to address the audience. Respect Chief Guest and respectable Vice Chancellor of LUMHS and my friends, Assalamu alaikum. वहीं मां शुरू करियां तो शाह लतीफ़ जे इन शहर सां ततीअ थधीअ का काने वेल विहण जी मतां थिए हूंदा पेर न लही पिरीअ जो। हिन में शाह लतीफ़ असांखे सबक़ ॾिनो आहे त पंहिंजे अल्लाह सां मोहबत करियो, उन जी इबादत करियो ऐं उन सां गॾु दुनिया जी बि ॿुधायो वियो आहे त दुनिया जी बि तव्हां महिनत करियो दुनिया में बि ऐं तव्हां करे ॾेखारियो उहे कम जो इंसान ऐं जंहिं मां कुझु सिखे। एक्चुअली शाह लतीफ़ ऐं जेका हिन में ॻाल्हि कई आहे त माण्हू पंहिंजी महिनत करे तमामु रिसर्च, जीअं तव्हां रिसर्च शुरू कई आहे, इहे ई ॻाल्हियूं उन पंहिंजे भेत में कयूं आहिनि त तव्हां ॾुखी हुजे सुखी हुजे तव्हां पंहिंजी महिनत करियो, राति ॾींहुं महिनत करियो, रिसर्च कयो ऐं कुझु तव्हां करे ॾेखारियो। त आउं बि हिकु इंजीनियर आहियां, पर असांजा दोस्त चवंदा आहिनि त असां इंजीनियर थी करे बि असां छा ठाहियो, असां हिन मुल्क लाइ छा कयो आहे। हेसि ताईं असां का शइ का इन्वेंशन न कई आहे। असां छो जो असांजो रिसर्च न आहिनि। लम्स में तमामु घणो हिते जेको आहे सो लम्स में महिनत कई वञे थी, रिसर्च स्टार्ट कई वई आहे, पर अॼु ताईं का इन्वेंशन न कई वई आहे। सो
आऊं सम्झां थो त असांखे वधि में वधि रिसर्च ते ध्यानु ॾियणु खपे ऐं सभु गॾिजी करे ऐं इन ते ध्यानु ॾियूं गवर्नमेंट खां उन खां असां पंहिंजा फंड वठूं त जीअं माण्हू सभु रिसर्च ते ध्यानु ॾी ऐं असां कुझु इन्वेंट कयूं दुनिया खे ॾेखारियूं त असीं बि जे डॉक्टर आहियूं असीं इंजीनियर आहियूं असीं बि कुझु करे सघूं था त एक्चुअली हीअ रिसर्च करण सां इनशाला you will get inshallah your goal inshallah you will success and will achieve your goal. Thank you, sir. Thank you, sir, for your warm words. We will now proceed to the thematic lecture of today's inaugural ceremony. I will now invite Professor Muwaddat Hussain Rana to please come forward and deliver his thematic lecture titled Integrating Healthcare Delivery with Sustainable Developmental Goals. Professor Muwaddat Hussain Rana began his journey as a gold medalist graduate of the pioneer batch of Army Medical College and has since been decorated with many accolades, including Sitara Imtiaz by Governor of Pakistan. He is known and loved for being a healer, a mentor, a academician, a researcher, and healthcare leader. We thank Professor Muwaddat Hussain for his honorable service and for continuing to take care of hearts and mind of this nation. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Vice Chancellor, Senator Kareem Khaya Sahab, Professor Muin Ansari Sahab, Honorable Deans, Engineer Ibrahim Sahab, ladies and gentlemen, what a huge honor and privilege it is to return to this beautiful hall that I have very fond memories of. I think it has been on several occasions that I have had this singular honor and privilege of returning to the Latif Auditorium, which in itself, Professor Senator Khaya Sahab was just telling me about the historical value of this place. और उन्होंने एक बहुत कमाल का हिस्टोरिकल वाक़या मुझे अभी भी सुनाया जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि वो इस डेट के मुनासबत से बहुत इम्पॉर्टेंट है जो मैंने आपके सामने इस स्लाइड पर दिखाई है। उन्होंने बताया कि 1989 में पहली दफ़ा मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा इस हॉल में तशरीफ़ लाईं और जब वो आईं तो बहुत सालों के बाद इस हॉल में कौमी तराना गूंजा, जिसके एहतराम में उसी तरह से लोग खड़े हुए जिस तरह से आज आप खड़े हुए हैं। ये बहुत ज़माने के बाद हुआ था इस हॉल में। इस वाक़े से निस्बत है इस तारीख़ की जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट की है, और प्रोफेसर उज्जैन साहब ने अभी ज़िक्र किया शहदा का, लेकिन ये जो तारीख़ है इसके बारे में एक और रेफरेंस है जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ। ये वो तारीख़ भी है जिस दिन ये जो लोग आप दीवारों पर देख रहे हैं यहाँ, जिनकी तस्वीर हैं,
इनको ज़रा एक दफ़ा देख लीजिए दोबारा से। अगर ये ना होते तो शायद हम यहाँ ना होते और वो कौमी तराना भी ना होता जिसके एहतराम में हम अभी बादब खड़े हुए। ये सब लोग उस पर्टिकुलर दिन पर इस दुनिया से जा चुके थे जिसका मैं जिक्र आपसे कर रहा हूँ, और शुक्र है कि वो जा चुके थे और अपने खालिक के हकीकी के पास थे, क्योंकि अगर वो जिंदा होते तो एक बार फिर शायद फौत हो जाते। क्योंकि ये वो दिन है जिस दिन जो ख्वाब उन्होंने देखा था, जो हकीकत उन्होंने बनाई थी अपने हाथों से, वो डिसइंटीग्रेट हुई थी, वो टूट गई थी। कितने लोग हैं हॉल में जिनको ये बात याद है कि ये सानिहा जिसमें वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान बिकेम टू सेपरेट नेशंस अकर्ड ऑन दिस डे? आप हाथ खड़ा करके मुझे बता सकते हैं कि ये जुमला सुनने से पहले कितने लोगों को ये बात याद है? अब ट्रेजेडी ये है कि जितने भी लोगों ने माशाल्लाह हाथ खड़ा किया यहाँ पर, ये मुझसे तो खैर बहुत सब उम्र में कम हैं, लेकिन बहुत सारे यंगस्टर्स जो यहाँ इस हॉल में हैं उन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया। दिस इज अ वेरी बिग ट्रेजेडी that while we continue to cherish our victories, we do not remember our tragedies. और कौमें हमेशा जो जिंदा रहती हैं वो सिर्फ जंग बदर और जंग खैबर की वजह से जिंदा नहीं रहती, वो करबला की वजह से भी जिंदा रहती हैं, उस लम्हे के लिए भी जिंदा रहती हैं जब बादियों नज़र में कोई ट्रेजेडी हुई हो। तो अगर इस्लाम करबला से ज़िंदा होता है तो ये भी जहन में रखिएगा कि अगर हम ये भूल जाएं कि हम क्यों दो लख्त हुए थे, हम क्यों टूटे थे, तो बहुत बड़ी ज़्यादती हो जाएगी, बहुत बड़ा जुल्म हो जाएगा इस कौम के साथ अगर आपने ये ना जाना और ना पहचाना कि ऐसा क्यों हुआ था। ये बहुत बड़ी आयरनी है और किसी दिन शायद मौका मिला तो इस आयरनी के बारे में, इसके जो साइकोसोशल एस्पेक्ट्स हैं जो एम्फसाइज कर रहे थे प्रोफेसर अंसारी अभी आपके सामने, इस पर ज़रूर बात करूँगा। इसकी एंथ्रोपोलॉजिकल रियलिटीज़ क्या थी, इसके अंदर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चरल वैल्यूज़, ऑफ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्टोरिकल वैल्यूज, कि जब सिंध की तारीख आप लिखना शुरू करें तो मोहनजोदाड़ो को भूल जाएं और मोहम्मद बिन कासिम को याद रखें। ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। इसी तरह की ट्रेजेडीज फिर 1971 की ट्रेजेडीज को आपके सामने लेकर आते हैं, बिकॉज यू फॉरगेट द बेसिक रूल दैट सॉइल इज बिगर and the greater determinant of human minds priorities. इस गुफ्तगू का आगाज़ मैंने 16 दिसंबर की डिसइंटीग्रेशन से इसलिए किया है कि आज की आयरनी ये है कि हम आपके साथ बात करना चाहते हैं इंटीग्रेशन की। तो अगर ये ट्रेजेडी आप ज़हन में रखेंगे ना जिसका मैंने आपसे जिक्र किया है, तो फिर इंटीग्रेशन में इसके बहुत सारे लेसन्स हैं और उन लेसन्स को लेकर मैं अपनी गुफ्तगू आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप मेरे साथ रहे तो हम आपको दोनों बातें डिसइंटीग्रेशन के हवाले से भी और इंटीग्रेशन के हवाले से जो लेसन्स हैं उनका जिक्र करते रहेंगे। और चूँकि अरबाब इक़्तिदार यहाँ मौजूद हैं और पीपल हु राइट द पॉलिसीज़ ऑफ पाकिस्तान आर हियर माशाल्लाह, तो फिर ये बहुत ज़रूरी होगा कि किसी कोने में उनके दिल के इनमें से कोई दरख्वास्त मौजूद रह जाए। और अगर हम चाहते हैं कि वाकई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स उस शख्स की ज़िंदगी में कोई तब्दीली लेकर आए जो इस वक्त हॉल में मौजूद नहीं है,
जो किसी सड़क पर इस यूनिवर्सिटी की इस वक्त खाक इकट्ठी कर रहा है, कोई बाथरूम धो रहा है, किसी लैब में एज ए टेक्नीशियन सॉल्यूशंस इकट्ठे कर रहा है, और जो इस बात का एहतमाम कर रहा है कि मैं और आप एक एयर कंडीशनड हॉल में कंफर्टेबली बैठ सकें। अगर वो मौजूद ना हो तो शायद हम में से कोई भी इतना कंफर्टेबली इस हॉल में नहीं बैठा होगा। जब तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स उसकी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं लाएंगे तो याद रखिएगा इंटीग्रेशन नहीं हो सकेगी। ये वो तस्वुर है इंटीग्रेशन का which I try and highlight to you and then leave some thoughts with you for consideration when you think of sustainable development goals. अब sustainable development goals के हवाले से मैं आपको यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ बात कि बुनियादी तौर पर sustainable से मुराद होता है चीज़ों का कायम रहना, जो बुनियाद हो उसकी, जो वजह हो उस शय की, वो जब चली जाए, वजह हट जाए, तो फिर भी वो शय कायम रहे और जिंदा रहे। इसको शहादत भी कहते हैं, लेकिन इसका एक और पहलू है, और शायद अगर वो पहलू आप अपने जहन में रखें, क्योंकि आप उस पहलू के, उस एस्पेक्ट के, उस फिलॉसफी के गार्डियन हैं। You are the guardians, owners of this heritage that I am about to share with you of sustainability. और उसके लिए मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये पहचाने आपने कौन लोग हैं? कौन है? यहां 4 लोगों का जिक्र है। सचल सरमस्त नजर आ रहे हैं, अब्दुल्ला शाह गाजी नजर आ रहे हैं, अब्दुल लतीफ बिटाई नजर आ रहे हैं, और झूलेलाल कलंदर नजर आ रहे हैं। ये है सस्टेनेबिलिटी। कौन सी यूनाइटेड नेशन ने इनके लिए बिल पास किया? किस असेंबली ने और किस सेनेट ने ये कहा कि हम हमेशा इन्हें याद रखेंगे? किसी ने कहा? इनको किसने जिंदा रखा हुआ है? उस इंसान ने जिसको ये एहसास है कि जब मैं इन्हें पुकारता हूं तो ये आते हैं। ये मैंने बहुत छोटा सा जुमला आपके लिए कह दिया है, तो लेकिन इसकी मानी पर गौर कीजिएगा। सस्टेनेबिलिटी की बुनियाद, इफ यू वांट हेल्थ केयर टू बी इंटीग्रेटेड इनटू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये जुमला ज़हन में रखिएगा कि जब मैं पुकारूं तो वो आए। ये मैसेज है इनका। सो इफ अ हेल्थ केयर डिलीवरर इज नॉट अवेलेबल, क्यों नहीं अवेलेबल? क्योंकि वो शाम को कराची चला जाता है प्रैक्टिस करने, क्योंकि वो छोटे छोटे शहरों में नहीं हो सकता। वो तो बड़े बड़े प्लाजों और बड़े बड़े शहरों और महल्लात नवा अस्पतालों में सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो जब उसको वो खाकरोब पुकारेगा जो सड़क पर इस धूप में मेरे और आपके लिए सड़क को साफ कराए, जब वो पुकारेगा तो उसके जवाब में कौन आएगा? उसको आप कहेंगे देखिए आपके लिए हमने प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज बनाई हुई हैं, आप ओपीडी में तशरीफ ले जाए ना। तो ओपीडी में उसको कौन देखेगा? सचल सरमस्त का एक मलंग। तो अगर किसी को यह एहसास हो कि जब मैं सचल को बुलाऊंगा, जब मैं लतीफ साईं को पुकारूंगा, जब मैं झूलेलाल का नारा लगाऊंगा, जब मैं गाजी के सामने हाथ जोड़ूंगा, तो जवाब में उसका मलंग आएगा। कितनी दफा पुकारेगा? वो किस यकीन से पुकारता है इन चारों को?
कि जब मैं पुकारूंगा तो ये नहीं कि हो सकता कि वो अपने मलंग को भेज दें, वो खुद आते हैं। ये उसका यकीन है, आप उसके साथ साइंटिफिकली डिफर कर सकते हैं। वी आर साइंटिस्ट, सो वी मे नॉट एग्री विद दैट फिलॉसफी, वी मे आर्ग्यू विद इट, बट लेट अस लुक एट द बिलीफ ऑफ दैट पर्सन। उसके अंदर वो जो यकीन और फेथ है कि जब मैं पुकारता हूं तो वो आते हैं, जब मैं कोई चढ़ावा चढ़ाता हूं तो वो उस न्यास को खाते हैं। ये उसका बिलीफ है। आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स राइट और रॉन्ग, बट दिस इज हिज बिलीफ। तो सस्टेनेबिलिटी सर तब शुरू होगी हेल्थ केयर डिलीवरी की कि जब मरीज पुकारे और आप आए। आपका हेल्थ केयर फिजिशियन का लेबल ना आए कि देखा तो था मरीज को, हाउस फिजिशियन ने देखा था। मैं एज ए साइकाइट्रिस्ट जिस वक्त कार्डियोलॉजी में या गायनेकोलॉजी में या फॉर दैट मैटर मैडम तशरीफ रखती हैं, मैडम यज़दानी हमारी उस्ताद हैं, हमारी बड़ी हैं, मैं रेफ़र करूं डेंटल सर्जन को और वहाँ देखें हाउस सर्जन उसको जो वहाँ ट्रेनिंग कर रहा है, तो फिर बात बनेगी नहीं, ऐसे तो नहीं बनेगी और सस्टेनेबिलिटी तो नहीं होगी। हाँ, प्रैक्टिस चलती रहेगी। So there's a lot of difference that I'm trying to highlight through these 4 pictures by giving you an idea of what is sustainable, what does not get delivered or trickled to the common man does not sustain. You can pass any number of bills and United Nations can make any number of goals, but those goals will never be fulfilled. मैं आपको थोड़ी सी तारीख समझा दूं कि ऐसा पहले हो चुका है, और अगर आपको यकीन नहीं आता तो आई एम अ साइंटिस्ट, आई ऑलवेज टॉक ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। आपको ये बात पहुंचा दूं कि यूएन जनरल असेंबली ने जब 2015 में सेनेटर करीम खाया साहब के होते हुए उसकी मौजूदगी में ये बिल पास किया था, 2016 से इम्प्लीमेंट होना था, तो इट हैड ऑलरेडी एक्सेप्टेड दैट द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स which had run for 15 years had failed. फेल हो गए थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, इसलिए रिवाइव किया गया, उसकी क्रिटिक की गई, उसका रिव्यू किया गया साइंटिफिकली, तो पता चला मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैव नॉट बीन सक्सेसफुल। बिकॉज व्हाई वर दे नॉट सक्सेसफुल? तो उसके बारे में मैं चंद आपको गुजारिशात पेश करूंगा कि एमडीजीज क्यों फेल हुए थे। तो क्या वही ब्लंडर 7 years down the road of sustainable development goals कहीं हम दोबारा तो नहीं कर रहे हैं? Are we not planning to now fail the same way that we failed the Millennium Development Goals? We now fail the Sustainable Development Goals. We fail to sustain it. 17 गोल बना दिए हैं, 169 टारगेट्स रख दिए हैं, उनके 320 इंडिकेटर्स भी मौजूद हैं, और वो बेसिकली 3 एरियाज को डील करते हैं जिनका मैं थोड़ी सी तफसील से भी आपसे और जिक्र करूंगा। बट देयर इज अ लिस्ट ऑफ डेवलपमेंटल गोल्स दैट यू कैन गो एंड टैप ऑन गूगल एंड इट विल कम आउट टू यू, सो आई विल नॉट बॉदर यू विद द डिटेल्स ऑफ इट। What I will however bother you is that look at the huge undertaking that these sustainable development goals are based on. अब ये जो बात मैं अभी आपको जो स्लाइड दिखाने लगा हूं, इस पर आप गौर कीजिएगा और जरा सा एक लम्हा सोचिएगा कि हेल्थ केयर डिलीवरी और इस पर्टिकुलर बेसिक डिनोमिनेटर का आपस में क्या ताल्लुक है, आपकी और मेरी रियलिटीज को ज़हन में रखते हुए। ये है कॉमन डिनोमिनेटर एंड द फर्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जितनी थीम्स हैं 17 की 17, उनका डिनोमिनेटर ये है। How many of you think that poverty can be eradicated in Pakistan? Please raise hands. Are we as healthcare deliverers contributing towards eradication of poverty?
or are we enhancing poverty? ये सवाल है जो आप हेल्थ केयर डिलीवरी देते हुए अपने आप से कीजिएगा. Am I about to eradicate poverty? Or am I about to enhance poverty? ये सवाल अपने आप से जरूर पूछिएगा अगर आप ये सेमिनार सीरियसली अटेंड कर रहे हैं. अगर क्योंकि उज्जैन साहब का हुक्म है और इसलिए आप यहाँ आए हैं, तो फिर it's okay. I mean, we'll have a good cup of tea after this and then we can disperse. But if you really mean something by being here, that you believe in sustainable development goals, तो फिर ये सवाल अपने आप से कीजिएगा. हर हेल्थ केयर डिलीवरी, whether it is done in a theater, on a dental chair, or in an OPD, please ask this question. Am I eradicating poverty? Now, why I am trying to emphasize on this? Let me show you here, and I'm sure I'm not adding to your knowledge in any way, लेकिन मैं सिर्फ थोड़ा सा झंझोड़ना चाहता हूं आपको, ये बताकर कि पॉवर्टी एरेडिकेट करना जरूरी क्यों है. What does it do? This is the hell that poverty unleashes on human beings. The hell. Just look at this hell. It undermines the sense of human development. मैंने बहुत साल पहले एक इंटरव्यू सुना था. वो उकाड़ा के करीब एक गांव का एक छोटा सा वाकया है. जब आप ये पढ़ रहे हैं तो ये बात बैकग्राउंड में ज़हन में रखिएगा. ये क्या होती है eradication of poverty and what is its impact, and keep this word human development in mind. उकाड़ा के गांव के अंदर कोई आया नौसरबाज, उसने कहा कि मैं आंखों का ऑपरेशन करता हूं, मैं आई सर्जन हूं और अमेरिका से आया हूं. तो जोक दर जोक लोग उसके पास आई के ऑपरेशन के लिए जमा हो गए, क्योंकि उसने कहा कि मैं हर ऑपरेशन का सिर्फ फ़कत 1000 रुपया लूँगा. वो सुबह से लेकर शाम तक ऑपरेशन करता रहा, बहुत सारे 1000 रुपया उसके पास जमा हो गए, क्योंकि 1000 रुपये अफोर्ड कर रहा था वो अलग गाँव का आदमी. शाम को उसने पैसे समेटने चला गया अमेरिका वापस. अमेरिका तो आपको पता है लोग आते जाते रहते हैं. तो जब पट्टियाँ खुली, so 70% people who were operated had turned blind. तो फिर वहाँ आपको पता है कि हम जाग जाते हैं अगर इस तरह की कोई ट्रेजेडी हो जाए. तो फिर सारी एजेंसीज भी वहाँ पहुँच गई, टीवी कैमरास भी चले गए, रिपोर्टर्स भी चले गए. तो एक रिपोर्ट मुझे देखने का मौका मिला जिसमें वो शख्स जो कि अंधा हो चुका था, उससे रिपोर्टर पूछ रहा था कि आपके साथ ये ट्रेजेडी हुई है तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं. तो अब उसका जुमला सुनिएगा. तो पंजाबी में जुमला था लेकिन मैं उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर देता हूँ आपको. उसने कहा कि ठीक ही हुआ है जो हुआ है, हम लोग डंगर हैं. पता नहीं आप डंगर समझते हैं कि नहीं समझते. डंगर समझते हैं, डोंग डंगर, जानवर. हम तो डंगर हैं. डंगर ने देखना भी क्या है दुनिया में, तो अच्छा है अंधे हो गए. ये करती है आपके साथ पॉवर्टी. उसने कहा जो मैं जिंदगी गुजार रहा था उससे बेहतर है कि मैं अंधा रहूं. तो वो मेरे ऊपर बड़ा एहसान करके गया अमेरिका वाला, मुझे अंधा कर गया, अब मैं कुछ नहीं देख सकता इसके बाद. ये है हेल्थ केयर डिलीवरी की ट्रेजेडी आपकी. दिस इज व्हाट इट एंटेल्स द पीपल हु लिव ऑन द ग्रास रूट्स. वो ये समझते हैं, ऑफिशियली ये समझते हैं कि उनके पास ये हक नहीं है. उनके लिए क्या बनाए गए हैं? अगर मैं 92 गाफ बे का रहने वाला हूं, किसी चक गांव का रहने वाला हूं, अगर मैं थल में रहता हूं, तो फिर मेरे लिए क्या सर्विसेज अवेलेबल है ऑफिशियली? क्यों सर? इट्स कॉल्ड प्राइमरी हेल्थ केयर. यही है ना? Now we got it all wrong.
primary health care is not about geographic placement of a patient. It is about the level of care. हमने उसको इस तरह से ट्रांसलेट किया है कि ज्योग्राफिकली जो पेरिफेरी में रहने वाले इंसान यानी कि डोल डंगर रहते हैं वो प्राइमरी केयर से हेल्प लेंगे, और जो शहरों में रहने वाले लोग हैं वो टर्शरी केयर से हेल्प लेंगे। ये ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है भाई, ये केयर का लेवल था। प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर, टर्शरी केयर इज द लेवल ऑफ केयर के जो छोटे मोटे अमराज हैं वो जो हैदराबाद के मोहल्ले में, जामशोरों के मोहल्ले में रहने वाला आदमी है उसको भी प्राइमरी केयर वाला देखेगा, और जब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड निमोनिया हो जाएगा तो फिर वो टर्शरी केयर में आएगा। तो आपने उसका क्या ट्रांसलेट किया है? आपने ट्रांसलेशन ये किया कि अगर आप फुकरे हैं, अगर आप गांव के रहने वाले हैं, अगर आप डोल डंगर हैं तो आपका इलाज प्राइमरी केयर में होगा, और अगर आप टाई लगाते हैं और अंग्रेजी बोलते हैं तो फिर यू कैन वॉक इनटू एनी टर्शरी केयर हॉस्पिटल एंड गेट हेल्प। राइट? डज नॉट मीन दैट टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स डू नॉट प्रोवाइड हेल्प टू पुअर पेशेंट्स। ऑफ कोर्स आई नो द एक्सीलेंट सर्विसेज दैट दिस हॉस्पिटल and this setup provides to the poor people of Sindh. I know that. But look at the philosophy of considering primary care as it is meant for the periphery. तो फिर जब पॉवर्टी होगी तो फिर ये नतीजे निकलेंगे। अब जो इसके अंदर पॉवर्टी का सबसे बड़ा नुकसान है वो यहां लिखा, जरा नीचे पढ़िएगा आप। It produces a poverty of compassion. It provides you with a poverty of tolerance. फिर ये नतीजा निकलेगा कि दस्तो गिरबान होंगे आम लोग एक दूसरे के साथ, दूसरे के दर्द महसूस करना खत्म हो जाएगा। इस वक्त अगर आपको ये कहा जाए कि एक धमाके में 4 लोग मर गए हैं तो यकीन करें आप वो खबर भी पूरी नहीं पढ़ेंगे। अब कहेंगे अच्छा 4, सिर्फ 4? हाँ, अगर ये हो कि 150-200 लोग उस धमाके में मर गए तो फिर आप तफसील से शायद पढ़े उसके बारे में। दिस इज एपैथी रिप्लेसिंग एम्पैथी। So it takes away the sense of nurturance out of people. जब आप impoverished हो जाते हैं तो उसने कहा साहिर लुधियानवी ने कि मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है। मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है। तो ये बात है। भूख इखलाक के सांचों में ढल नहीं सकती। तो फिर एक्सपेक्ट ना करिएगा उनकी कोई एथिकल डायमेंशंस एंड एथिकल डेवलपमेंट्स ऑफ अ पर्सन हु इज impoverished. This is the impact of poverty. So sustainable development goals can be measured on account of the impact that they can have, and healthcare can be an example for that. देखिए बेसिकली जो एम्फसिस है वो ये गालिब का शेर आपको शायद याद हो, तंगदस्ती गर ना हो गालिब, तंदुरुस्ती 1000 नेमत है, तंगदस्ती अगर ना हो, गुर्बत अगर ना हो, गुर्बत में सेहत का भी कोई लुत्फ नहीं है। So it takes a whole dimension out of the 3 main areas that sustainable development goals are. There are some sustainable development goals that emphasize the social dimension of life, others the environmental perspectives, and the third the economic. But if they are not linked with harmony, happiness, well-being, which are the promises of health, सिर्फ एक वो शख्स जो सेहतमंद है वो खुशी महसूस कर सकता है, एक सेहतमंद शख्स है जो वेलबींग महसूस कर सकता है, और एक सेहतमंद शख्स है जो किसी दूसरे के बारे में सोच सकता है। अगर मैं खुद अपने अजाब में हूं तो मैं आपके अजाब को कैसे पहचानूं? तो खुद तकलीफ में हूं, बहुत बुरे हालात में हूं। तो जनाब ये ज़हन में रखिएगा कि हेल्थ केयर डिलीवरी का इम्पैक्ट then would be social, environmental, and economic. So if you want healthcare to be integrated and have an impact on all the 3 parameters, then it must entail a sense of well-being, a sense of harmony, and a sense of happiness.
अगर वो शख्स जो आपके पास से उठ के जाता है, लेकिन इस कॉम्प्लिकेटेड सी स्लाइड को पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं अगर ये बात मैं जो अपनी है ये ना पहुंचा सकूं आपको, कि जो मरीज़ आपके सामने बैठ के उठ के जाए तो उसके अंदर सबसे पहले ये एहसास पैदा हो कि हाँ अब मैं ठीक हो जाऊंगा, आई विल बी वेल। उसको ये लगे कि उसका और आपका एक हारमोनियस रिश्ता बन गया है, वो आपको पहचानने लगेगा, मेरे डॉक्टर हैं, इन्होंने मेरा ख्याल रखा था, इन्होंने दांत के दर्द में मेरा दांत निकाल दिया था, मैं पूरी रात चैन से सोया था उसके बाद। ये रिश्ता, दिस इज हार्मनी। लास्ट ऑफ ऑल कि जब वो बाहर निकले तो वो खुश हो। तो अपने आप से सवाल कीजिएगा अगली दफा जब मरीज आपको छोड़ के जा रहा हो, क्या आपका उसके साथ रिश्ता बन गया है? क्या उसको ये एहसास हो रहा है कि वो ठीक हो जाएगा, ही विल बी वेल नाउ, एंड इज ही हैप्पियर देन व्हेन ही एंटर्ड योर क्लिनिक? If you have not done these three, I am sorry, the integration of healthcare into sustainable development goals will not take place. So you can contribute towards sustainable development goals by achieving these three phenomena. मेरा काम आपके साथ आज सिर्फ ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को और आपके साथ और आपके काम के साथ लिंक कर किसी तरह से। तो अगर ये जवाब आए तीनों तो आपको मुबारक हो। करीम खायद साहब जो वादा करके आए थे दुनिया के साथ वो पूरा हो गया। नाउ सर, आप ये स्लाइड नहीं देख पा रहे लेकिन मैं आपको ये पढ़ दूं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बुनियाद सच्चाई है। अगर हम पॉलिसी के लेवल पर, प्लानिंग के लेवल पर, एक्शंस के लेवल पर और इंडिकेटर्स के लेवल पर झूठ बोलेंगे, पॉलिसी में, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में झूठ बोलेंगे, यानी कि एक रिसोर्स एलोकेट तो होगा बट इट विल नेवर अराइव होगा। मैं ऐलान करता हूं आज इस फोरम से कि मैं आपको अगले 3 महीने में 1 करोड़ रुपए की ग्रांट दूंगा। उसके बाद मैं जानूं और 1 करोड़ रुपया जाने, आपने कौन सा मेरे पास आना है? मैं अगर आप आएंगे भी तो मैं मिलूंगा ही नहीं आपको। अखबार में खबर लग जाएगी, सोशल मीडिया पे ऐलान हो जाएगा 1 करोड़ की ग्रांट हो गई। इस तरह की पता नहीं कितनी ग्रांट्स आई, पता नहीं किसके लिए आई, किसने खाई, क्या हुआ उनका, व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट इट लेड टू दैट पर्टिकुलर ग्रांट। That's the question of truth. And then probably my most esteemed Senator Saab can stand up in the next assembly and say, we have done it. सच से होगा सर, सच से होगा। और वहां पर आपको ये भी तय करना पड़ेगा कि जो रिसोर्सेज एलोकेट होते हैं वो एक्चुअली जाते कहां हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात अभी सुनाता हूं। मैं पाकिस्तान रेड क्रिसेंट के बोर्ड पर हूं। तो पाकिस्तान रेड क्रिसेंट काम कर रहा था, हमने यहाँ भी काम किया, लाड़काना में ख़ास तौर पे काम किया। बहुत सारे देहात जहाँ पर पाकिस्तान रेड क्रिसेंट के नुमाइंदे पहुँचे, कुछ हेल्प करने की कोशिश की जो हमने करना चाहा था। हमें पता चला कि हर 100 रुपया जो हम खर्च कर रहे थे फॉर द फ्लड इफेक्टीज, आपको पता है फ्लड इफेक्टी को उस 100 रुपए का, ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त, एक्चुअली द मैन हु वाज अफेक्टेड बाय द फ्लड, 100 रुपए में से उसके ऊपर कितने पहुंच रहे थे? कैन यू गेस? जितना वडेरा मुनासिब समझे। उतने ही पहुंच गए। और ये ना सोचेंगे वडेरे जो हैं वो सिर्फ सिंध में होते हैं या पंजाब में होते हैं, नहीं।
जिसने 100 रुपये दिए थे ना, वो नॉर्वे की गवर्नमेंट थी, वो पहला वडेरा था। उसने कहा 15 रुपये तो यहीं छोड़ जाए। ये क्या है? ये सर्विस चार्जेस हैं। 85 मिल गए। तो फिर 15 रुपये हमने कहा कि वो देखिए, इस्लामाबाद से अब कोई चीज़ लाड़काना पहुंचाना, कोई चीज़ थल पहुंचाना, कोई चीज़ हैदराबाद पहुंचाना, सखर पहुंचाना, ये कोई आसान है? तो 15 रुपये हमारे लिए छोड़ दें। तो बाकी रह गए 70। ठीक है, तो 70 रुपये हमने देने थे एक ठेकेदार को। तो ठेकेदार ने फिर डिसाइड करना था कि वो वडेरा साहब के यहाँ कितने पहुंचाएगा, कैसे, किस फॉर्म में पहुंचाएगा, और वो फिर डिसाइड करेंगे कि इफेक्टी को कितने मिलेंगे। तो बस आप कैलकुलेट करते रहिए फिर कितने मिलेंगे। दिस इज नॉट द वे सस्टेनेबल डेवलपमेंट विल टेक प्लेस विद सो मेनी कंज्यूमर्स इन बिटवीन। So sustainable development goals requires this last line, betterment of human condition. तो जनाब, वो किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि जब हम ही ना महके फिर साहिब, तुम बादे सबा कहलाओ तो क्या, तुम आओ तो क्या, ना आओ तो क्या। ये कह रहा है वो आदमी, वो आपसे पूछ रहा है कि देख खुर्शीद तरक्की, जरा इंसाफ से कह, मेरे घर में भी तेरी कोई किरण आई है। That is the question that he is putting to you, ladies and gentlemen. So basically what I am trying to say is that the real way of healthcare delivery, making a change in the sustainable development goals by 2030, there's only one method. And that method is the way of the saints, the 4 pictures that I had shown you. Because उनके दरबार में जब आए तो सभी एक हुए, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। तो साईं लतीफ़ को फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके दरबार में वज़ीर आला आएंगे या वज़ीर आज़म आएंगे, सदर आएंगे कि चपड़ासी आएंगे। जिस दिन हेल्थ केयर डिलीवरी के अंदर ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा, द वे ऑफ द सेंट, हाउ डज अब्दुल्ला शाह गाजी डील्स विद अ विजिटर। क्या उनकी कब्र के लिए एक वीआईपी दरवाजा और एक आम लोगों का दरवाजा है? वैसे हमारा बस चले तो बना दें, हमारा बस चले तो बना देंगे। वैसे आपको ये भी पता है कि अगर मैं जानता हूँ किसी को और साईं झूलेलाल के यहाँ चला जाऊँ, झूलेलाल कलंदर के यहाँ, तो मेरे लिए हो सकता है कि दरबार के बाकी तमाम आम इंसानों को हटा दिया जाए उतनी देर के लिए वहाँ से, ताकि मैं और झूलेलाल कलंदर एक कमरे में अकेले हो जाएं। तो मुझे यकीन है कि मेरा कलंदर पता क्या कहेगा, दुर फिटे मुँह। ये मेरे मेहमान थे जिसको तूने निकाल दिया। ये तरीका है सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स को हेल्थ केयर डिलीवरी में इंटीग्रेट करने का। लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. We, on the behalf of organizers, thank you for being with us here. Liaquat University has a rich tradition of honoring our guests with customary gifts and souvenirs. I request the Chairman and Secretary Organizing Committee to escort the worthy Vice Chancellor of Liaquat University of Medical and Health Sciences to center the stage to decorate our honorable guest. I request our chief guest, Professor Mubaddat Hussain Rana, to kindly come forward and recite his souvenir and token of our gratitude for his presence here today.
Great, sir. Very, very good. I now request our guest of honor, Dr. Karim Khwaja, Chairman, St. Mandel Authority, to receive this award. Now I request Engineer Muhammad Ibrahim, who is the Pro-Vice Chancellor of University of Art and Culture, to please receive a token of our love and regards. Okay, sir, please. I would request Professor Dr. Feroz Ali Kanuri, Dean Faculty of Dentistry, to receive this award. Now I will request Professor Dr. Munawar Alam Ansar, who is a Dean Faculty of Basic Health Sciences and Public Health, to receive the souvenir. Ready, sir? Please, sir, wait कीजिएगा सर, एक कीजिए. Wait, sir, please. I would request Professor Dr. Ashok Kumar Nisrani, Dean Faculty, Surgery and Allied Sciences, to receive this award. I now request our guest of honor, this Dr. Taha Hassan Ali, the esteemed Vice Chancellor of Mehran University of Engineering and Technology, to please come forward and receive this award. Sir. Thank you. The event would not have been possible without the wise and able leadership of our worthy Vice Chancellor, Professor Dr. Ikramuddin Udyam. On behalf of us all, I request our chief guest, Professor Dr. Muwaddat Hassan Rana, to please come forward and do the honors of presenting Professor Dr. Ikramuddin Udyam with this special memento.
Every leader needs a dedicated team to help make his vision a reality. Professor Dr. Muin Ahmad Ansari has set a new standards for dedication by its honest effort to organize this summit. I request our chief guest to present Chairman Organizing Committee, Professor Dr. Muin Ahmad Ansari, with a souvenir. This is yours. I will. Finally, I request our worthy Vice Chancellor to present a souvenir to the Secretary Organizing Committee, Professor Dr. Rahil Sikandar, for her hard work that has made this day truly special. I would now request our chief guest to please present a special souvenir to the Co-Secretary Organizing Committee, Dr. Atir Hanif Rajput. Dr. Atir, please come forward and receive your souvenir. Thank you, everyone. You may all be seated now. I now request the Secretary of Organizing Committee, Professor Dr. Rahil Sikandar, to kindly come forward and deliver her vote of thanks. Assalamu alaikum and a very good afternoon to all of you. Honorable guests, respected dignitaries, dear ladies and gentlemen, it's my privilege to have been asked to propose a vote of thanks at this occasion. I, on behalf of entire Organizing Committee of International Academic and Research Summit, the supporting, sponsoring organizations, entire healthcare fraternity here together, and in my own capacity as a Secretary of Organizing Committee, I extend a very hearty vote of thanks to all the speakers and guests for gracing this summit with their valued presence. Ladies and gentlemen, to make possible all that we have executed, the wheels started rolling many months ago with the tireless planning of our Chairman Organizing Committee, Professor Muin Ansari, leading up to this day. We have been fortunate enough to be backed by a team of very motivated and dedicated colleagues from Liaquat University, Jamshoro, who know their job and are result-oriented. I cannot thank everyone enough for their involvement and their willingness to take on the completion of the task. But ladies and gentlemen, I also want to thank our Vice Chancellor for his generous support and valuable input from time to time while organizing this event. I also thank many collaborators, supporters, sponsors, and most importantly, the volunteers who served the conference so well. Thank you all and a good luck. Thank you, ma'am. Your word means a lot to us. As we conclude the opening ceremony, we are excited to begin the academic summit and explore developments and research in the field of medical and health care.
We have impressive lineup of speakers and panelists who will share their knowledge and expertise over the course of next few days. We are grateful to have all of the participants for the journey and look forward to engaging a meaningful discussion and learning from one another. Thank you so much and Allah Hafiz. I would request the chief guest and the guest of honors to please proceed to the exhibition area to inaugurate it.